choosy also, and films comes to me also. How challenging it was doing a role in Virappan, that too a wife of a, Virappan. yes. Yes. See, it was challenging because I knew about Virappan because we all know because he used to be in the headlines, okay, something, but something or the other, not in detail. And I never knew about Muthulakshmi. First time when I met Ramu sir, he briefed me about Muthulakshmi, and at that time I came to know about Muthulakshmi. And it's a challenging in a way because it's a real character, and so we had to keep it very natural and very real. We can't just take some cinematic liberty and do something else. We had to keep it very real. But Ramu sir has been working on this film from last 10 to 15 years. So his research helped me to understand the character of Muthu Lakshmi. Okay, everything is, today the press show has been happened and the people are, appreciating the film. Everyone is giving a good review. Do you think half the battle is won once the critic like the film? Even your part is appreciated? Yeah. I'm very thankful and I'm very happy because so far in all reviews they appreciated my work. So I'm actually very happy today, and I hope that even people will come and see the film and even they will appreciate the film. Okay, whether it is Bhutnath or whether it is a previous film where you won national award, don't you think you'll get somewhere down the line typecast? No, I don't. I don't have that fear to get typecast because I'm happy if I'm representing a normal Indian woman. I'm happy in that. I don't have an issue. Okay, given a choice, a glamorous role or something like a. Am I not looking glamorous yes, today? You looking hot. Then yes. Sure. Would you be interested doing a Yeah, of masala course. film with Rohit Shetty or Yeah, Farah yeah, Khan? I dance well, and I would love to do that. And this is my appeal to them also. Ki please look me into this dress and cast me. Okay, thank you so much. Thank you. Just be there. Controls मान लेना. संदीप. आज फिल्म का प्रीमियर हो रहा है और मीडिया ऑलरेडी फिल्म देख चुकी है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. क्या आप मानते हैं कि आधी जंग जीती जा चुकी है? ये आप कह सकते हैं. मेरे लिए जंग पूरी तब जीती जाएगी जब ये फिल्म रिलीज़ होगी और सब लोगों तक पहुंचेगी और उनका रिस्पांस देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ओके, अभी तक फिलहाल क्रिटिक ने बहुत पसंद किया है जो आज प्रेस शो हुआ है और काफ़ी अच्छे रिव्यू आ रहे हैं. बिल्कुल. इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत- एक बार क्रिटिक ने फिल्म पसंद कर ली तो ऑडियंस भी अपने आप. बहुत खुश हूँ मैं और मैं खुशी अपनी जाहिर भी नहीं कर सकता. इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है कि चाहता हूँ कि आज भी लोग उसी तरह से वो करें और कल भी वैसे ही ओपनिंग रिस्पांस मिले, परसों भी वैसे मिले और तरसों भी वैसे ही मिले. ओके, नर्वस है, एक्साइटेड है कि कल जनता के सामने मैं फिल्म नर्वस होने तो बिल्कुल नहीं हूँ. आज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. वाली. थैंक यू हाँ, थैंक यू सो मच. अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई हैं. ठीक है, अप्स एंड डाउन सभी के लाइफ में आते हैं, बट मैं समझता हूँ आरजीवी इस फिल्म के साथ वापस अपना हुनर दुनिया को दिखाएंगे, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट वन. Sachin, today people have seen the press show and there's a very good review about the film. Do you think half the battle is won once the critics start liking the film? Well, final battle is always the important one. Audience is the king. They decide what it is. Critics have loved it. I have loved it. I mean, we have done our honest work. But at the end, audience should decide. I mean, that is the final win. Okay, last films of Raju doesn't have done a good business even on box office critically or commercially. Do you think it will be a comeback film for RGV? It is a comeback film, and I am confident about it. He's come back with this film. Thank you.
Okay, I just taking 2 minutes of yours. Well, what are you expecting tonight? You know, Veerappan is already appreciated by film critic and all, though they have already seen the press show. What are you expecting? I think I'm just expecting a lot of. I basically, to be very honest, I exactly don't know how he was caught and how did he kill people and his basically his life story. I just know the basis of it. So I'm very excited to actually watch it as to how he lived his life and how he got caught and everything. So I'm looking forward to a great story. I'm looking forward to a great direction and looking forward to some great performances tonight. We just spoken to Sachin Joshi and he said it's a comeback movie for RGB. What's your view? I think one of the finest filmmakers that we've had. As I keep telling, like before coming also, I was talking to one of my friends. I think Ram Gopal Verma sir is one person जिनकी फिल्में देख के हम सारे बड़े हुए हैं. And he's just been phenomenal. And I think with this, I hope there's a huge success for him. And I hope really all the best for the film and to the entire team of Veerappan. तो I've been a राम गोपाल वर्मा फ़ैन. मैंने उनकी बचपन से लेकर आज तक जो सारी पिक्चरें देखी है मैं उनका फ़ैन रहा हूँ. So I'm very excited and a friend of mine is involved in it. Sachin Joshi is producing it and is acting in it, and so I'm here to support him. Okay, you know, we had spoken to Sachin Joshi and he said it will be a comeback film for RGB. What's your take on that? I hope so too because I love the kind of films he used to make. And यार एक फिल्म होती है, एक फिल्म अच्छी बन जाती है तो लोगों को लगता है वो वापस आगे नहीं बनती तो एक और फिल्म की ज़रूरत होती है. But I think it's just a matter of one film. So once he gets that film, yeah, people will accept him back. Okay, do you agree with this? You know, RGB is the one who started the trend of making a biopic, whether it is, you know, from Sarkar and other films which he made, and the people started following him. Now he's coming with Veerappan and all. I don't know यार, ये मतलब मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, सॉरी. He's the one who started making कौन सी बायोपिक बनाई इन्होंने पहले? किसकी बायोपिक थी? बट इट वाजंट कॉल्ड अ बाला साहेब ठाकरे बायोपिक. बट वो अच्छी फिल्में बनाते हैं और अच्छी कहानियाँ, अच्छे सब्जेक्ट उठाते हैं. तो वीरप्पन भी वैसे ही एक सब्जेक्ट है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म. थैंक यू. यस, आई हैव टू रन. थैंक यू. Sachin Joshi, he said it would be a comeback movie for RGB. What's your take on that? I'm sure what he's saying is right. I've always been a fan of Ram Gopal Varma's movies, so I've come to see Veerappan. Okay, Veerappan is something very sensitive subject to make on. You know, how do you think how he's going to manage everything? You know? I made a film called Lama, which was a sensitive subject. So I think as long as you are able to put forth a good film with great content, it really doesn't matter whether it's sensitive or insensitive. Okay, today, you know, the press people have seen the film and the critic is really appreciating the film. Do you think half the battle is won? Once the critic like the film? No, I don't think so. I think it's the box office that has to be won. If people like the film, the box office will do well and everybody will be happy. Thank you so much. Thank you. ऑनेस्टली आइडियाज़ नहीं आ रहे थे कुछ खास कंट्रोवर्सीज़ के, इसीलिए शांत थी. अभी कुछ लेके आऊँगी बहुत जल्दी. तो कंट्रोवर्सी का आइडिया मैं आपको देता हूँ कि आई होप कि विराट कोहली की टीम जीतने वाली है. तो आप क्या कहेंगे? विराट कोहली, हाँ, यार विराट कोहली से प्यार कौन नहीं करता, और हम तो दिल से करते हैं. नहीं, आप अपने अंदाज में कुछ और ही करती हैं मतलब. हाँ ऑफ कोर्स, इसीलिए तो मैंने हम दिल से करते हैं. पूनम, वीरप्पन के लिए यहाँ हैं आप, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं और क्या आप मानती हैं? सचिन जोशी ने भी कहा कि राम गोपाल वर्मा की वापसी है. He's back with. Well, honestly, Ramu sir, Mr. Ram Gopal Verma, I would say Veerappan. I mean, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा कुछ ऑल ऑफ अ सडन वापस लेके आया. नो एन इंडियन गैंगस्टर एंड मुझे तो पर्सनली वो बहुत इंडियन, आई मीन मुझे ये वीरप्पन बड़ा हॉट लगा ऑनेस्टली. और मैं यहाँ पे हूँ ऑफ कोर्स देखने के लिए कि ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा ये चीज़ चर्चे में इन जो हिसाब से लोग प्रमोशन कर रहे हैं. ऑफ कोर्स इट्स गोना बी अ बिग हिट. एंड मिस्टर राम गोपाल वर्मा, एवरीवन नोज कैसे हैं, किस तरीके की पिक्चर बनाते हैं. सोशल नेटवर्किंग मीडिया पे बातें हो रही थी कि हम आपको कब देखेंगे, मतलब कौन से नए अंदाज में, कोई फिल्म में या क्या कुछ है? यार आप लगता है मुझे फॉलो नहीं करते, मैं रोज़ नए पिक्चर्स तो डालती ही रहती और हूँ. मतलब आगे क्योंकि उसके अलावा मेरी फिल्म की अनाउंसमेंट मैं करने वाली हूँ आई वुड से इस वीक में इनफैक्ट, इसीलिए मैं शांत थी.
सोचा कि क्यों थोड़ा कंट्रोवर्सी से एक स्टेप बैक लेके आगे एक थोड़ा सा ना सती सावित्री बिकॉज मुझे सूट नहीं करता तो बट लिटिल बिट फिल्म का नाम अगर आप बताना चाहें। यार सब अभी बता दूंगी तो फिर यहाँ पे मैं वीरप्पन के पास आई, वीरप्पन को मिलने तो जाऊँ मैं पहले Okay, might be I'm repeating myself, the last one, you know. क्या आप एग्री करती हैं कि आरजीवी की कमबैक फिल्म है? Honestly, for Ramu sir, I would say when you are creative, आप कभी भी अपने आप को prove कर सकते हो. And I think he has again proved to people that I'm here. Thank you. Thank you. Thank you.